ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I sincerely welcome all of you for today's Ekadasi class. मैं बहुत सत्यनिष्ठा के साथ आप सभी का आज की एकादशी कक्षा में स्वागत करता हूँ। Okay, first time I heard this word Satyanistha. Good. Our Hindi vocabulary in the translation is increasing in our Dasosmi family. I am very, very grateful to Kushal Vihari Prabhu for doing this service. Thank you, Prabhu. I should say I am very grateful to have this service. For me to give a class in Hindi becomes extremely difficult because I think in English. प्रभु जी कह रहे हैं कि मुझे हिंदी में क्लास देना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि मैं अंग्रेजी में सोचता हूँ। And then lot of translation happens and because my Hindi is not good, I translate it wrongly. और बहुत सारा इसमें अनुवाद करना पड़ता है और क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए अनुवाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है। That translation doesn't have the Satyanistha. और उस अनुवाद में सत्यनिष्ठा शब्द नहीं मिलेगा। Neither there is Nishtha and nor there is Satya. ना ही निष्ठा है ना ही सत्यनिष्ठा है। Hare Krishna. So today we are going to discuss a very, very important, essential topic which just happened to come in my life recently. तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत हाल ही में मेरे जीवन में आया था। I hope all of you are attentive, those who are with the video on, those who are without the video on. Please be तो मैं आशा ये कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। जिनके वीडियो खुले हैं और जिनके वीडियो बंद हैं वो सभी लोग। Okay, thank you. So there is a washroom that is there on the first floor which I generally use. तो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में ही एक वॉशरूम है। And near that washroom there is a coconut tree. और उस स्नानागार के पास में एक नारियल का पेड़ है। And one day when I was going and entering the washroom, immediately two crows started flapping and they were just about to attack me. और एक बार जब मैं वहाँ जा रहा था तो दो कौवे अपने पंख फड़फड़ाने लगे और मेरे ऊपर आक्रमण करने वाले थे। And I was like shocked, why they are attacking me? I'm just going and using the washroom. और मैं अचंभित रह गया कि वो मेरे ऊपर क्यों आक्रमण कर रहे हैं, मैं तो केवल वॉशरूम में जा रहा हूँ। And then I went to the washroom.
और फिर मैं उसके बाद वॉशरूम में गया। When I came out with the towel on, I wanted, you see, I have a little bit of investigating nature. तो फिर मैं तौलिया बांध के बाहर निकला, और क्योंकि मेरा जांच करने का बहुत मन करता है, ऐसा मेरा स्वभाव है, तो मैं देखने लगा। As soon as I came out and I was starting to investigate, immediately again the crows became very, very active. और जैसे ही मैं देखने लगा और ये जांच करने लगा, तो तुरंत ही फिर से वो कौवे बहुत फिर से पंख फड़फड़ाने लगे। And one of the crow was little far off. One of the crow was just sitting above my head and caw, 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 with anger. और तो एक कौवा जो था वो थोड़ा दूर था, और दूसरा कौवा बिल्कुल मेरे सर के ऊपर था और जोर जोर से आवाज कर रहा था, कां कां कां। And I was just perplexed and confused. What is happening? And then I looked in the center of that coconut tree. There is a small nest of the crow. तो मैं पूरी तरीके से अचंभित था कि ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। फिर मैंने देखा कि उस कोकोनट नारियल के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला है। And then I understood, oh, they are really concerned about their nest. और फिर मुझे समझ में आया कि वो अपने घोंसले को लेकर बहुत चिंतित हैं। And then I did my own work, and time and again, as I have to use the washroom again and again in the day, so time and again I would go and see the nest, and the crows would become so possessive, so insecure, that even if I look at the nest, they will start caw, 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 and like that. तो उसके बाद मैं अपने काम करने लगा, और क्योंकि मुझे दिन में कई बार मुझे जाना पड़ता है वॉशरूम, तो जब भी मैं वहां पहुंचता था और विशेष रूप से जब उनके घोंसले की तरफ देखता था, तो वो कौवे तुरंत ही असुरक्षित महसूस करने लगते थे और जोर जोर से आवाज निकालने लगते थे, कां 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 की। And one of the crow, I think the mother crow, would sit over the nest. I think there were eggs inside which were not visible, and the other crow, I think the father crow, would become the security guard. तो उनमें से एक कौवा, मादा कौवा जो थी, वो अंडों के ऊपर बैठती थी उन्हें सेचन करने के लिए, और जो दूसरा कौवा, पिता कौवा है, वो हमेशा सुरक्षा करने के लिए दूर से देखता रहता है। I felt so relaxed being a brahmachari. तो मुझे बहुत आराम प्रतीत हुआ ये सोच के कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। But I was closely observing the crows grihastha ashram. लेकिन मैं बहुत ही सूक्ष्मता से कौवों के गृहस्थ आश्रम का अध्ययन कर रहा था। So, and other devotees also, they were very, very afraid, because one devotee, while he was going on the staircase, practically the crow attacked him. और बाकी भक्त जो मंदिर के हैं, वो बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि एक भक्त जब ऊपर चढ़ रहा था, तो उस समय कौवे ने उसके ऊपर आक्रमण भी किया था। So, but nothing happened, and just 7 days before, I think 10 days before, the eggs hatched. और फिर कुछ नहीं हुआ, और अभी 7 या 10 दिन पहले जो अंडे हैं वो पूरी तरह पक गए और उनसे बच्चे बाहर आए। And I could see the crow coming, and then the bird crow making the mouth open, wide open like this, the raider mouth, and ka 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 ka, and like this, and then the crow would feed inside both of them. There were 2 actually. और फिर जो छोटे बच्चे थे वो अपना मुंह खोल के का का करते थे, और जो माता या पिता कौवा थे वो आके उनके मुंह में खाना खिलाते थे। And within just 2 days, I was shocked that one of the kid is just sitting, and the other kid started frolicking up and down. और कुछ ही दिन में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। Just कुछ ही दिन नहीं, in a couple of days, 2 days. I was like noting down everything. I was very curious. तो 2 दिन के अंदर ही मैंने देखा कि एक जो बच्चा था वो तो बैठा था, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो फुदक रहा था और इधर से उधर घूम रहा था। And the kid that was frolicking, the kid was not looking like a crow.
और जो बच्चा फुदक रहा था वो कौवे जैसा दिख भी नहीं रहा था। And the kid which was frolicking, it was not making sound like a crow. और जो वो फुदक रहा था वो कौवे की तरह आवाज भी नहीं निकाल रहा And था। then I understood it's not a crow, it's a cuckoo. तब मुझे समझ में आया कि ये कौवा नहीं है, ये एक कोयल है। Hare Krishna. The Grihastha Ashram of Crows ki jai. कौवों के गृहस्थ आश्रम की जय। And it was a cuckoo. For the first time I was shocked and I immediately came to my laptop and put how a cuckoo is coming out from the crow's nest. तो मैं पूरी तरीके से चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कौवे के घोंसले में एक कोयल का बच्चा आ गया। इसलिए मैं तुरंत आके लैपटॉप खोला। And then I realized it's a reality that cuckoos come out from the crow's nest. और तब मुझे पता चला कि ये वास्तविकता है कि कौवे के घोंसले में कोयल के बच्चे होते हैं। And I read the entire life of the cuckoos. और मैंने कोयल की पूरी जीवन गाथा को पढ़ा। And what we are going to hear today with a lot of attention and patience is what we can learn from the life of the cuckoos. तो आज हम बहुत ध्यान से और धैर्यता से जो सुनने वाले हैं कि किस प्रकार से कोयल का जीवन चलता है, उससे क्या सीख सकते हैं। See, it is very important that we learn from Mother Nature. तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रकृति माता से क्या-क्या सीख सकते हैं। In Srimad Bhagavatam, there is a sage inside the forest whom King Yadu meets. श्रीमद् भागवतम में एक साधु की कहानी आती है जिनसे राजा यदु मिलते हैं जंगल And के that अंदर। sage says that he has 24 gurus from the nature itself who makes him Krishna conscious. वो ऋषि बताते हैं कि उनके 24 गुरु हैं जो उनको कृष्ण भावनामृत बनाते हैं। And there it is said that how it is important to make ourselves Krishna conscious by observing the nature minutely. और वहां पर यह बताया गया है कि किस प्रकार हम प्रकृति के ऊपर ध्यान देकर वहां से भी कृष्ण भक्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। One of Srila Prabhupada's disciples has written a small book on that section entitled Enlightenment Through Natural Path. तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है एनलाइटनमेंट थ्रू नेचुरल पाथ, यानी प्राकृतिक मार्ग के द्वारा एनलाइटनमेंट। Hare Krishna. I don't know what is enlightenment Hindi. That is why I don't speak in Hindi. So this cuckoo. The cuckoos are really love singing. जो कोयल है उनको वास्तव में गाना बहुत अच्छा लगता है। And there is so much love singing and enjoying and singing and enjoying and singing and enjoying. They think that why I would take the burden of making a nest. तो वो इतना गाने में मग्न रहते हैं, इतना मग्न रहते हैं, तो वो सोचते ही नहीं है कि उन्हें क्या जरूरत है घोंसला बनाने की। There are so many birds who are making the nest. और यहाँ बहुत सारी चिड़ियां हैं जो घोंसला बनाती हैं। Let me sneak in and make my nest in their nest. तो मैं उनके घोंसलों में चुपके से घुस जाऊंगी और उनके घोंसलों में अपना घर बना लूंगी। And the cuckoos, they don't go through the hard endeavor of doing the nesting and doing this, doing that, feeding the babies. They sneak in to the crow's nest. तो ये जो कोयल है वो कभी भी अपना घर नहीं बनाती है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करती है, बच्चों को खिलाने की भी कोई मेहनत नहीं करती है। वो केवल कौवे के घोंसले के अंदर अपने बच्चे अपने अंडे छोड़ देती है। So the first lesson we learn is Maya Devi is like the cuckoo. तो पहली जो शिक्षा है वो हम ये सीखते हैं
कि माया देवी कोयल की तरह होती है। So Maya Devi is a great devotee of Vishnu. तो माया देवी भी भगवान विष्णु की महान भक्त हैं She is always interested in singing about the glories of Vishnu. और वो हमेशा भगवान के गुणगान के लिए बहुत She is रुचि called रखती है। Narayani because she exactly follows the instructions of Narayan. और क्योंकि वो हमेशा भगवान नारायण के जो निर्देश है उनका पालन करती हैं, इसलिए उनका नाम ही नारायणी है। In Brihad Bhagavatam, Maya Devi is seen worshipping the Mohini form of the Supreme Lord, where she gets lot of intelligence. तो बृहद भागवतामृत में माया देवी भगवान की मोहिनी रूप की पूजा करते हुए मिलती हैं And she is always constantly hearing Krishna Katha from her husband. और वो हमेशा अपने पति से कृष्ण कथा सुनती रहती So है। where she has time, तो उनके पास समय कहाँ है? but she has got the service of deluding all of us. और लेकिन उनके पास जो सेवा है वो है हम सभी को विमोहित करने की। So she is concerned, इसलिए वो चिंतित रहती है like the cuckoo, एक कोयल की तरह। and she sneaks in our nest. और वो चुपके से हमारे घोंसले में घुस जाती है। Interestingly, you will never find any nest in the material world which says, Maya, be careful. और ये बहुत सोचने का विषय है कि आपको इस भौतिक संसार में कोई भी ऐसा घोंसला नहीं मिलेगा जहां पर लिखा हो माया, उससे सावधान रहिए। Maya doesn't create any shop. माया कोई भी दुकान नहीं खोलती है। Maya doesn't put any endeavor. माया कोई भी मेहनत नहीं करती है। Maya sneaks in to our endeavors in life. और माया हमारे प्रयास हैं उनमें चुपके से घुस जाती है। Let you do the endeavor. I will lay my eggs into your nest. तो आप मेहनत करते रहिए और मैं चुपके से आपके घोंसले में अंडे दे दूंगी। Maya is like the cuckoo who is expert in laying her eggs of Maya into our nest of material endeavors. माया उस कोयल की तरह है जो हमारे प्रयासों में हमारे भौतिक प्रयासों में चुपके से अपने अंडे दे देती है। Now you see, let's study about the crow. This crow, the mother crow and the father crow, they were convinced that they are doing the endeavor for creating kids. They are doing a great endeavor. तो अब हम इन कौओं का अध्ययन करते हैं। ये माता और पिता कौवे जो थे वो बहुत प्रयास कर रहे थे और उनको पूरा विश्वास था कि वो अपने ये बच्चों के लिए कर रहे Because हैं। I saw the crows before the kids hatched. तो मैंने जब बच्चे पैदा हुए थे उससे पहले कौओं को देखा था। They were very meticulous. वो बहुत ध्यानपूर्वक They were very passionate. और बहुत ही जोश के साथ करते They were feeling a great hope that we are doing. They were convinced. और उनको बहुत आशा थी और वो इसलिए पूरी मेहनत के साथ कर रहे थे, उन्हें पूरा विश्वास था। And Maya does not tell that what you are doing is wrong. Maya tells what you are doing is right and sneaks in to your nest. माया कभी भी आपसे नहीं कहती है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। माया हमेशा आपको यही बोलती है कि आप सही हैं और तब वो अपने आपके प्रयासों में प्रवेश कर जाती है। Whether it is Hitler who was convinced that he was doing a great job by persecuting so many people. जैसे हिटलर वो पूरी तरीके से उसको विश्वास था कि वो जो कर रहा है वो लोगों वो के भले के लिए कर रहा है। The terrorists are convinced that they are doing great job. और जो आतंकवादी हैं उन्हें पूरी तरह विश्वास है कि वो अपना कार्य सही कर रहे हैं। The philanthropists and those who are working for the society, they are convinced that they are doing great job. तो समाज सेवक जो इस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वो भी पूरी तरह विश्वस्त हैं कि वो इस समाज के लिए सही कार्य कर रहे हैं।
And we are also convinced that we are doing a great job. और हम लोग भी पूरी तरीके से विश्वस्त हैं कि हम भी एक महान कार्य कर रहे हैं। Srinitaya Das is convinced that he is doing a great job. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि वो भी कन्विंस हैं कि वो अपना सही कार्य कर रहे हैं। But are we hatching the right egg? That's the biggest question. लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हम सही अंडों का निषेचन कर रहे हैं? Because this material world, nowhere you will find that it is Maya. Everywhere you are going, you will find that I am doing a great job. क्योंकि इस भौतिक संसार में आप कहीं भी ये लिखा नहीं देखेंगे कि ये माया है। हर जगह आपको यही पता चलेगा कि आप महान कार्य कर रहे हैं। Maya Devi uses our endeavor, whatever it may be, to put the eggs of distraction into them. माया देवी सारे प्रयास करती हैं ताकि वो हमारे प्रयासों में अपने जो हमें मार्ग से भ्रमित करने वाले अंडे जो है वहां रख सके। Recently, I was hearing the Bhagavatam class in temple. One devotee was giving class about the dangers of offending Vaishnavas by becoming proud. So one devotee in the end asked a question. तो हाल ही में एक कक्षा सुन रहा था हमारे मंदिर में, जहाँ पर एक भक्त भागवतम कथा में बता रहे थे कि वैष्णव अपराध करने का क्या-क्या नतीजा होता है। So one devotee asked the question. तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, it seems very safe to stay away from the association of devotees. प्रभु जी कि यह भक्तों के संग से दूर रहना बहुत ही सुरक्षित। Then I will not commit अपराध. तो क्योंकि हम कभी अपराध नहीं करेंगे। So if you stay outside the association of devotees, Maya sneaks in and put the eggs. And if you stay in the association of devotees, Maya sneaks in and put the eggs. तो यदि आप भक्तों के संग से दूर रहेंगे, तब भी माया आएगी और आपके प्रयासों में अपने अंडे देके जाएगी। और यदि आप भक्तों के संग में रहेंगे, तब भी माया आएगी और अपने अंडे देकर जाएगी। प्रभु जी, if I become wealthy, then I'll become proud. Better I am poverty stricken. प्रभु जी, अगर मैं धनवान हो जाऊंगा तो मैं बहुत घमंडी हो जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं गरीब ही बना रहूं। If you are wealthy, Maya will sneak in your nest and make you and give you the wealthy egg. तो अगर आप धनवान हैं तो माया आपके घोंसले में आएंगी और आपको धनवान वाला अंडा देके जाएंगी। And if you are the poverty-stricken beggar in the street, you will get that egg in your own endeavor. और अगर आप सड़क पे खड़े हुए भिखारी हैं, तो माया आएंगी आपके प्रयास में वो भिखारी वाला अंडा देके जाएगी। If you are born in a very high birth and high class, then Maya will give you the egg that is nicely suitable for your nest. और यदि आपका बहुत उच्च कुल में जन्म हुआ है, तो आपको माया वो अंडा देकर जाएगी जो आपके लिए ही बना हुआ है। And if you are born in the most degraded class, Maya will give you that egg. और यदि आपका जन्म बहुत ही निम्न कुल में हुआ है, तो माया आपको उसी प्रकार का। If you are educated, Maya will give you an educated egg. और यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो माया आपको पढ़ा लिखा। And if you think that you are uneducated, you are safe in this world, there is an uneducated egg specially designed by Maya which sneaks into your nest. और यदि आप निरक्षर हैं, तो भी माया आपको ऐसा अंडा देके जाएगी जो निरक्षर लोगों के लिए बना हुआ है। Because Maya, like the cuckoo, never creates her nest. Maya gives the egg in your nest which you feel is appropriate in life. तो माया उस कोयल की तरह है जो अपना कभी घोंसला नहीं बनाती है। वो आपका घोंसला जिसमें आपको लगता है कि आप सबसे सही कार्य कर रहे हैं, वहीं अपना अंडा। If you are a brahmachari in a temple, Maya has a specific egg, the saffron egg for the brahmachari. और यदि आप मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, तो माया के पास आपके लिए एक विशेष भगवा रंग का अंडा है जो आपको देके जाएगी वो।
And if you think, oh, it's staying in, I have seen over so many years in ashram, so many people, oh, Prabhuji, temple, it's ashram is too difficult, and so much of management in ISKCON, and so much of problems and conflicts and disturbances. Let me go and stay a little aloof, away, get married, and settle down. Then Maya brings a white egg, the Grihastha egg for you. तो मैंने अनेक वर्षों से मंदिर में रहते हुए देखा है कि कभी कभी ब्रह्मचारी कहता है कि प्रभु जी इस मंदिर में बहुत समस्या है, यहाँ पर बहुत मैनेजमेंट प्रबंधन करना पड़ता है और बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं थोड़ा सा इस मंदिर से दूर चला जाता हूँ और वहां पर शादी करके वहां के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता हूँ। तो माया उसको सफेद अंडा, गृहस्थ आश्रम का अंडा देके जाती है। So every endeavor in this material world, no matter whatever you do, the cuckoo of Maya is expert in laying the egg, which is exactly similar to the egg which you have laid in your own nest. तो माया एक बहुत ही दक्ष कोयल के समान है, जो आप जो भी प्रयास करें उन सभी प्रयासों में वो आपने जिस रंग का अंडा दिया है बिल्कुल उसी तरह दिखने वाला अंडा देके जाएंगे। When I researched, I found out that there are more than 60 varieties of cuckoos who give different types of eggs based on different locations they are in. और जब मैंने इसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि 60 प्रकार की कोयल होती हैं अलग अलग जगहों पे, और वो सभी 60 प्रकार की कोयल अलग अलग तरीके के अंडे देती हैं अलग अलग घोंसलों में। Hare Krishna, really the Maya. And that's what Krishna says, Daivi esa gunamayi mama maya duratyaya. और यही भगवान कृष्ण कहते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। My material energy, Maya Devi, is impossible to overcome. मेरी भौतिक शक्ति माया देवी इनसे कोई पार नहीं पा सकता। Because Maya doesn't come like Maya. Maya comes as if it is your own egg. क्योंकि माया कभी माया के रूप में नहीं आती है, माया बिल्कुल उस रूप में आती है जिसमें आपका खुद का अंडा होता है। And Maya's eggs are really, this is the first lesson, that cuckoo sneaks in and gives the egg quite similar to the egg of the crow. तो माया बिल्कुल वो कोयल जैसी है, जो कोयल एकदम वैसा ही दिखने वाला अंडा देकर जाती है। But the interesting thing is, then I did research that I put the next question to the Google Mahaprabhu, that how it is possible when I am looking at the crows, they are really very insecure. How the cuckoo can come, sneak in and put? तो रोचक बात ये है, जो मैंने दूसरा प्रश्न गूगल महाप्रभु में डाला, उसमें मैंने पूछा कि जब जो कौवे थे वो इतने ज्यादा चिंतित थे, तो फिर कोयल वहां पहुंची कैसे और कैसे उसने अपना अंडा। This is called enlightenment through the Google path. ये है गूगल के मार्ग के द्वारा अध्यात्म। But you have to ask the right questions, otherwise the Google egg is also there. तो लेकिन आपको सही प्रश्न पूछना होगा, क्योंकि गूगल का अंडा भी है माया के पास। So I learned that the cuckoos, they lay their eggs top, just like you have seen sometimes the birds, they put their dropping, they put their stool, they just pass it. Yes. So similarly, the cuckoos, they go to a top and they aim at the nest and pass the egg just like the stool. तो मुझे पता चला कि कोयल जो होती है, जिस प्रकार से अपनी बीट करते हैं, छोड़ते हैं, उसी प्रकार से वो घोंसले के सीधा ऊपर जाकर अपने अंडे इसमें गिरा देती है।
And the eggs are so strong, so robust, so really designed that it doesn't break when it lands on the crow's nest. और जो अंडे होते हैं इतने मजबूत होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये गिरने के बाद भी टूटते नहीं है। Hare Krishna. Just imagine. So this is the nature of the eggs of Maya. Maya's eggs are really glamorous. तो ये माया का जो स्वभाव है, क्योंकि माया के अंडे बहुत सुंदर दिखने वाले होते हैं। And they're really robust. और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। And they really are designed to capture us. और वो बिल्कुल उसी प्रकार से बने हैं ताकि हमको अपने वश में कर सकें। Like for example, many years before, there was a revolution that to increase the food production, and they called it Green Revolution. उदाहरण के लिए बहुत वर्षों पहले एक क्रांति आई थी जिसको लोग ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। And then they started using pesticides, fertilizers, artificial fertilizers to increase the production, and the production increased and increased. Oh, Maya's egg! तो उसमें लोगों ने बहुत सारी कृत्रिम खाद का प्रयोग करना शुरू किया और बहुत सारे कीटनाशक का प्रयोग करना शुरू किया और उससे बहुत फसल हो गई और माया का अंडा। And within 10 years they realized that it is simply bringing cancer and the use of pesticides, the use of fertilizers, and now today 300% rise in the cancer patients. The cuckoo has hatched from the crow's egg. और उसमें किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि इसकी वजह से, कृत्रिम खाद की वजह से और ये कीटनाशक की वजह से लोगों को कैंसर होगा। और आज हम देखते हैं कि 300% को कैंसर के पेशेंट बढ़ गए हैं। The egg of automobile industry, the egg of ACs, the egg of genetically modified foods, the egg of social media, the egg of internet, everything. They look really glamorous, exactly as if it is our endeavor. It is going to create a revolution, just like the crows. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अंडे हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंडे हैं, सोशल मीडिया के अंडे हैं, और ये अंडे सभी बहुत एकदम जो हमारे प्रयास हैं और हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले हैं, लेकिन ये सभी माया के अंडे होते हैं। But slowly and slowly, we start finding that they are creating actually more cuckoos. और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो जो अंडे हैं उनमें से बच्चे आ रहे हैं और वो सभी कोयल हैं। So in this way, the material energy is extremely intelligent to lay the eggs in such a way that we are convinced that this is our egg that is going to create happiness and a happy life, satisfied life in this world. तो हम देखते हैं कि माया इतने अच्छे तरीके से ये अंडा देती है कि हमें लगता है कि ये हमारा ही अंडा है और इसके द्वारा हमें बहुत खुशी मिलने वाली है। And for devotees, Maya is really careful. और भक्तों के लिए माया बहुत ही सावधान रहती है। Because devotees are reading so much Bhagavad Gita, they are hearing so much, so Maya knows how to give special devotee eggs. क्योंकि भक्त लोग बहुत भगवत गीता पढ़ते हैं और बहुत भक्ति करते हैं, तो माया जो है स्पेशल भक्त का अंडा जो है वो लेके आती है। Because we are reading and hearing, we are reading Bhagavad Gita about Maya. क्योंकि हम लोग श्रवण कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं और हम भगवत गीता से माया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। And Maya Devi smiles.
You may read, but I have already given the eggs on your nest. Hare Krishna. और माया देवी मुस्कुराती हैं तुम पढ़ सकते हो मेरे बारे में, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हारे घोंसले में अपना अंडा दे दिया है। So one becomes proud by reading Bhagavad Gita. Hare Krishna. व्यक्ति बहुत ही घमंड में चला जाता है भगवत गीता पढ़ के। I have memorized so many slokas. I have memorized the Vedas. I have memorized the Upanishads. I have memorized so many slokas. Hare Krishna. तो मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैंने बहुत सारे श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं, मैंने भगवत गीता के श्लोक, वेदों के श्लोक, सब श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं। This is the reading egg. ये पढ़ाई वाला अंडा है। And this is the reciting egg. और ये बोलने वाला अंडा है। This is the egg that where we show that how knowledgeable I have become in Krishna consciousness. तो ये वो अंडा है जिसके रास्ते से हम ये दिखाते हैं कि हम कितने ज्ञानवान हो गए हैं भक्ति में। And we are thinking that wow, I am reading Bhagavatam, I am reading Bhagavad Gita, but Maya has come, sneaked in, and laid the eggs, and we are simply hatching the egg of false pride. और हम सोचते हैं गीता भागवतम पढ़ के बहुत ज्ञानवान हो गया हूँ, लेकिन माया ने पहले ही अपने घमंड के अंडे को हमारे उसमें डाल दिया है और हम इस घमंड के अंडे का निषेचन कर रहे हैं। While giving his teachings, Lord Chaitanya Mahaprabhu to Sanatan Goswami in the Sanatan Siksha, one of the most prominent regulation that Lord Chaitanya Mahaprabhu gives to Sanatan Goswami is that one should not read lot of books. तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक नियम उन्होंने बताया था, वो ये था कि भक्त को कभी भी बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। And Srila Prabhupada writes in the purport that the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and the nectar of devotion and the Chaitanya Charitamrita are enough for taking one back to Godhead. And if one is not careful and is trying to read so many books, one may get completely confused and diverted from the path of Krishna consciousness. श्री प्रभुपाद ने कहा है कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इन पुस्तकों के अलावा हमें और पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करेगा वो पूरी तरीके से भ्रमित हो जाएगा और भटक जाएगा। I know one devotee who used to very closely, and he was a very nice devotee, and he started reading so many books, this book from the internet, that book and this book and that book and this book and this book and so many books. मैं एक भक्त को बहुत पास से करीब से जानता हूँ, और वो भक्त बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें इंटरनेट से निकाल कर ये बुक वो ये पुस्तक वो पुस्तक बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर After reading all the books, he left the Association of Devotees and ISKCON, because ISKCON is giving very minuscule, minimal knowledge, छोटा बुद्धि. और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद फिर उन्होंने ISKCON को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ISKCON जो है बहुत छोटी सी भक्ति की दे रहा है। The reading egg of Maya. माया का पढ़ाई वाला अंडा है ये। And then, after some years, we heard news that he is not even able to follow the 4 regulative principles. Hare Krishna. और कुछ सालों के बाद हमने सुना He was initiated in ISKCON. और वो ISKCON में दीक्षित भक्त थे, और कुछ सालों के बाद पता चला कि वो 4 नियमों का पालन भी नहीं कर पा रहे। The reading egg of Maya. माया And का that is पढ़ाई वाला। why it is important that we must stick to the books that Srila Prabhupada has given us. We must stick to what we are hearing from our spiritual masters. तो ये बहुत आवश्यक है कि हम वही पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करें जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दी हैं,
और अपने गुरु महाराज के वचन को सुनने की ही कोशिश करें। Otherwise, Maya will come and sneak in, and then the Maya of how we are doing lot of services. तो हमें इस प्रकार से माया, अगर नहीं तो माया अंडा दे देंगी, और दूसरा जो है वो है हम जब बहुत सारी सेवा How much I am preaching and how many people are connected with me, how I am a great preacher. तो मैं कितना प्रचार कर रहा हूँ और कितने लोग मुझसे जुड़ गए, मैं एक महान प्रचारक बन गया हूँ। Maya Devi from behind is putting the egg in the nest of our nice preaching. तो माया देवी पीछे से आकर तो बहुत अच्छे प्रचार का अंडा हमारे And we are thinking we are hatching the eggs of preaching and we will derive Krishna Prem. Tick, 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 tick. What is coming out is Maya's egg. तो हम सोचेंगे कि हम बहुत अच्छा अंडा दिए हैं और बहुत सारा प्रचार हम कर रहे हैं, लेकिन जब उसमें से निकलेगा तो वो माया का अंडा होगा, माया का बच्चा। We are giving so much of donations to the temple. हम बहुत सारे दान दे रहे हैं मंदिर को। And we think that I am running the temple. हम सोचने लगते हैं कि मैं ही इस मंदिर को चला रहा हूँ। And just see how charitable person I am. और देखिए कि मैं कितना ही दानी व्यक्ति हूँ। The egg of Maya has entered your nest. और माया का अंडा आपके घोंसले में पहले ही जा चुका है। So whether we do a lot of charity or we don't do charity, whether we read or don't read, whether we chant a lot of rounds, whether we don't chant a lot of rounds, Maya is so expert to drop her eggs in our own nest. तो चाहे हम बहुत सारी पढ़ाई करें या ना करें, चाहे हम बहुत सारा प्रचार करें या ना करें, या बहुत सारे हम माला जाप बहुत ज्यादा करें या ना करें, लेकिन माया इतनी दक्ष है कि वो अपना अंडा हमारे घोंसले में डाल के चली जाएगी। This is the second lesson that Maya does for the devotees, the devotee egg. And then I saw the please behold, this is the crux of the storyline. Hare Krishna. तो ये दूसरी शिक्षा थी एक भक्त के अंडों की, और जो अगली शिक्षा है उसके लिए बहुत ध्यान से सुनिए आप। Then while searching in the Google, then I got a YouTube link, which I will share to all of you. तो जब गूगल में ढूंढ रहा था तो एक YouTube लिंक मुझे मिला जो मैं आपके साथ बांटूंगा। I saw that 3 minutes of clip. I thought immediately I should go out of the material world. तो मैंने उस 3 मिनट की क्लिप को देखा और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मुझे इस भौतिक संसार से बाहर जाना है। How many of you right now in the class itself want to see that 3 minute of clip? तो आप में से कितने लोग अभी इस कक्षा के अंदर ही I am also feeling excited to see it again. It's really, really nice. Please lo and behold. I will create that. Just give me 1 minute of time to open it. It's there in the YouTube. Yeah. Hazrat. Okay, just 1 minute. Yeah, now it has started. Where do I go? Yes, and now I'll share. Just wait. So I will not give you the sound because you don't require the sound, or let me give the sound also. Let me see where I can optimize the clip, where it is. Oh, here. Optimize for video clip and share the sound. You are able to see? You are able to see? Yes, Prabhu. Okay. Nice sound of cuckoo.
Just next door, in an even smaller nest, the female reed warbler incubates its 4 eggs. One of the brood is starting to hatch. However, it is not the young reed warbler. 2 weeks ago, a female cuckoo, unseen by the reed warbler, dropped her egg into this nest. This is the reed warbler bird, which is not able to understand that there were a lot of eggs, and you see the eggs, and the other eggs are still there, but the cuckoo's egg, they hatch very fast. They are more robust, and it has come out. The cuckoo's egg has come out. You are able to see? Say Hari Bol. Yes, Kushal Vihari Prabhu. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वीड वॉबलर नाम का पक्षी है और इसने बहुत सारे अंडे दिए थे, लेकिन एक अंडा है जो सबसे पहले निषेचित हो गया है। एक्चुअली यही कोयल का अंडा है जो सबसे ताकतवर अंडा होता है और सबसे जल्दी ये निषेचित हो जाता है। And you are able to see that, you see the eggs do not have any difference, just little difference in the shade of color. You are able to see? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंडे का रंग है उसमें बहुत हल्का सा अंतर है, और उसके अलावा तो ये पूरा अंडा एक जैसा ही दिखता है। Just wait and watch what is going to happen. This is just 3 minutes 57 seconds. Please see it. It is not the young reed warbler. 2 weeks ago, a female cuckoo, unseen by the reed warbler, dropped her egg into this nest. Now the young cuckoo hatches as the first of the brood. The reed warbler did not notice the trick and now feeds the young as if it were its own. तो इसको समझ में नहीं आता है. This other bird is not able to understand that this is not her kid. He thinks that it is her kid only. बोलो in हिंदी. तो उसको, इस पक्षी को ये समझ में नहीं आता है कि ये किसी और का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है, और ये उसको की देखभाल करता रहता है. To throw the other eggs out of the nest. If it doesn't do this, then the parents will not be able to feed all the nestlings. Now you see that what after the cuckoo is taken birth, what the cuckoo is trying to do. Please see it very, very carefully. But the first attempts are not successful. The cuckoo is still too weak. It tries again. It must push the egg above the edge of the nest. It is a big effort. The determination of the weak cuckoo nestling to get rid of the competition is amazing to see. After a few hours, it has another go. This time, there's some success. The first egg landed in the water. When it throws out the second egg, the cuckoo almost follows it out of the nest itself. Now, for the last one. Alone at last. The ever-open, bright red beak and the constant peeping from the cuckoo prompts the reed warblers to bring it food without a break. Now all the insects and spiders end up in its beak. With such intensive feeding, the young cuckoo reaches its adult size in just 2 weeks. It is so large that when it sits on the nest, it must hold tight so it doesn't fall off. In a strong wind, the nest may even break apart under its weight. Although
Although the cuckoo is by now much bigger than the reed warblers, they still treat it as if it's one of their own nestlings. Even after it has left the nest, they will still feed it. At the end of August, the young cuckoo will start its lonely journey to Africa. It will return next spring, maybe even to the same reed bed, and try to toss an egg into a reed warbler's nest. I paid ₹99 for your webinar, and if like this, Hare Krishna. This is the crux of today's class. तो आज की कक्षा का ये सबसे सबसे ये महत्वपूर्ण शिक्षा है. So Maya just doesn't sneak to give her eggs. It hatches and throws out your egg of devotional service. तो माया न केवल अपने अंडे उसमें देती है, बल्कि निषेचित होने के बाद ये आपके सारे अंडे, भक्ति के जितने भी आपने अंडे दिए हैं वो सब बाहर फेंक देती है. And just like an innocent bird that you saw in the video, you are still feeding the bird of Maya, thinking I am doing devotional service. और बिल्कुल इस वीडियो में जैसा आपने देखा कि आप उस माया को ही आप केवल दाना खिलाते रहते हैं, सोच के कि ये मेरा ही अंडा है, मेरा ही बच्चा है. This is the expertise of Maya and how we should be careful of Maya. तो ये माया की दक्षता है और कितना हमें सावधान रहना चाहिए माया से. So the crows which I saw, there was only one crow. That means in the Gosala, the cuckoo also would have done the act of throwing, but it was successful in throwing just the one egg. Because generally crows don't give one egg, either 2 or 3. But there was only one crow taking birth. तो जो गौशाला के पास जो मैंने कौवा देखा, तो वहां पर केवल एक ही था. साधारणतया ये कौवे 2 या 3 अंडे देते हैं. इसका मतलब इस कोयल ने बाकी अंडों को बाहर फेंक दिया था. So this is what should make us really careful of the material energy. तो यही है जो हमें इस भौतिक शक्ति के प्रति बहुत सावधान बनाना चाहिए. And more we are careful of the material energy, more and more we will be able to understand how the material energy is working and sneaking in my nest. और जितना ही हम इस भौतिक शक्ति के प्रति सावधान रहेंगे, उतना ही हम समझेंगे कि किस प्रकार ये हमारे घोंसले में हम अपने अंडे दे रही है. Just like you see, the other eggs were there and this cuckoo's egg hatched first. और जिस प्रकार से आपने देखा कि बाकी सारे अंडों से पहले ये कोयल का अंडा जो है पूरी तरीके से निषेचित हो गया. So similarly, the eggs given by the Maya, the devotional service done through material motivations and all those things will get such immediate success. They will think, oh, what I'm doing in life. और उसी प्रकार से माया के जो अंडे हैं, उनके जो भक्ति, उनके द्वारा जो भक्ति करते हैं, उनके जो फल हैं वो हमें तुरंत ही बहुत बड़े मिलने लगेंगे और हमें लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं. Very fast, I am a great devotee. बहुत जल्दी मैं बहुत महान भक्त बन गया हूँ. But our devotional service remains very external and very shallow. लेकिन हमारी जो भक्तिपूर्ण सेवा है वो पूरी तरीके से बाह्य हो जाती है और बहुत हल्की हो जाती है. And we keep on feeding the cuckoo in our devotional service, thinking it is our bird of devotional service. और हम उस कोयल को ही खिलाते रहते हैं, सोचते हुए कि यही मेरी भक्ति है. But the last question to be discussed is, how come the crows are not able to realize it's the cuckoo's egg? लेकिन सब जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि कौवों को ये पता कैसे नहीं चल पाता कि ये उनका अंडा नहीं है.
because that's the expertise of Maya, which lays exactly similar eggs. क्योंकि ये माया की दक्षता है कि वो बिल्कुल समान दिखने वाले अंडे देती है। And that is why, in order to safeguard ourselves from material energy, there is only one principle. तो इसीलिए हमें भौतिक शक्ति से बचाने का केवल एक ही सिद्धांत है। We have to give up the conception that I will do devotional service the way I think it is right. तो हमें ये विचार त्यागना होगा कि मैं भक्ति को उसी प्रकार से करूंगा जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि सही है। I will try to do devotional service what I think is appropriate. मैं उसी प्रकार से भक्ति करूंगा जो मार्ग मुझे सही लगता है। This is the perfect way to invite the cuckoos to drop their eggs in our nest, to invite the Maya, drop her eggs. और ये सबसे अच्छा तरीका है माया को बुलाकर और उसको अपने अंडे हमारे घोंसले में देने के लिए। Are we practicing devotional service for the pleasure of the spiritual master, for the pleasure of Krishna? हम जो भक्ति है वो अपने गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। And when we do that, when we practice devotional service, not because I want to do devotional service in the way I want to do, I just want to please Krishna, I just want to please my spiritual master. तो मैं भक्ति ऐसा नहीं करूंगा जैसा मुझे सही लगता है भक्ति करने के लिए, मैं अपने गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करूंगा। And when we have that attitude of surrender to the Guru Parampara, that will safeguard us from the eggs of the cuckoo. और जब हम इस प्रकार का हम अपने गुरु परंपरा की शरण में जाएंगे तो ये हमारी भक्ति की रक्षा करेगा। Srila Prabhupada said that my greatest concern is my devotees are not sufficiently fearful and careful of the material energy. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि मेरे शिष्य इस भौतिक प्रकृति की शक्ति के प्रति सावधान नहीं है। We must understand that no matter how much ever we are strong, no matter how much ever we are educated, no matter how much ever we are doing whatever we are doing in devotional service, we are simply insignificant by the power of the material energy. तो हमेशा हमें ये रखना चाहिए कि हम चाहे भक्ति में कितनी भी सेवा कर रहे हो, चाहे कितना भी अच्छा प्रयास कर रहे हो, लेकिन हम माया की शक्ति के सामने कुछ नहीं है। No matter how big we become, no matter how many years we spend in devotional service, we must always remain subservient and surrendered to the spiritual masters. तो चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं या कितने वर्षों तक भक्ति करते रहें, लेकिन हम माया के सामने हमें केवल अपने गुरु के सामने उनका सेवक बन के रहना चाहिए। And this attitude of rendering service and devotional service based on what the path my spiritual masters have shown can save us from the getting illusioned by the egg of Maya. तो हमारे गुरु वर्गों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर वहां पर भक्ति जो सेवा है वो भक्तिमय सेवा उस मार्ग पर करके हमारे पास माया के अंडे से बचने का दैवीयस गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते. By surrendering to Guru and Krishna, by surrendering to the instructions of scriptures, and by becoming humble and understanding that I do not know what is good for me in my devotional service. तो भगवान गुरु और शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके और विनम्र बन के कि मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से मुझे भक्ति करनी है। I do not know what is the purports of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. तो मुझे नहीं पता कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य क्या कहते हैं। I do not know who is Krishna and who is Srimati Radharani.
मुझे नहीं पता कि भगवान कृष्ण कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है। It is only by mercy of Srila Prabhupada and his books and the Guru Parampara who are representing Srila Prabhupada in our lives. By their mercy, I am able to understand what is right for me and what is wrong for me. तो केवल ये हमारे गुरु परंपरा की कृपा और हमारे श्रील प्रभुपाद के जो प्रतिनिधि हैं उनके निर्देशों के अनुसार मुझे ये संभव हो पाएगा कि मैं समझ पाऊं कि किस प्रकार से भक्ति करना है। If you think that you have become so great that you have understood what has to be done in devotional service, then we are hatching the eggs of Maya. तो यदि आपको ये लगता है कि आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार आपको भक्ति करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप माया के अंडे को सेंच रहे हैं। You must understand that we are simply dependent on the mercy of the Guru Parampara and the mercy of Nityananda Prabhu and Gauranga Mahaprabhu. तो हमें ये समझना है कि हम पूरी तरीके से गुरु परंपरा पर निर्भर हैं और उनकी कृपा पर निर्भर हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर निर्भर हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा पर निर्भर हैं। And this Ekadasi is actually to help us note down and find out whether the last 15 days I was hatching what eggs. तो ये एकादशी इसलिए है कि हम पिछले 15 दिनों में हमने क्या किया ये पता करके हम लिखें कि हमने कौन से अंडों को हमने सेंचा है। Let me really become submissive to the will of the Lord, to the will of the Guru. तो मुझे गुरु और कृष्ण की जो इच्छा है उनके प्रति पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए। Then I am safe from the eggs of the cuckoo. तो माया और उस कोयल के जो अंडे हैं उनसे सुरक्षित रह पाऊंगा। You all bless me that the lesson which I gave sinks in my heart and remains with me, and I always remain surrendered and submissive to the Brahma Madhva Gaudiya Guru Sisya Sampradaya and Srila Prabhupada and his representatives in my life. आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो शिक्षा मैंने आपको बताई है वो मेरे हृदय में हमेशा रहे और मैं अपने ब्रह्म मध्व गौड़ी गुरु शिष्य परंपरा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहूं। And I always remain surrendered to the teachings of Srila Prabhupada, and I act only how Srila Prabhupada has directed me in life. मैं श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति समर्पित रहूं और उनके निर्देशों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करूं। And not look for different types of eggs, but serve just to please the spiritual master. तो अलग-अलग प्रकार के अंडों के लिए मैं देखता ना रहूं और केवल सेवा करूं ताकि मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर सकूं। All of us remain safe from the cuckoo's eggs. और हम सभी उस कोयल के अंडों से सुरक्षित रहें। And may the cuckoo egg of Maya not throw away our egg of devotional service, and which is going to hatch into Krishna Prem at the end of life. तो हम ये प्रार्थना करें कि जो माया के जो अंडे हैं और जो उससे जो कोयल निकले वो हमारे भक्ति के अंडों को हमारे घोंसले से बाहर ना फेंक दे, जिससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। Always remember that video, how as soon as it came out, the first thing it did was throw out the eggs. तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये वीडियो कि जैसे ही वो कोयल का बच्चा निकला उसने बाकी अंडों को बाहर फेंक दिया। May all of us remain safe at the lotus feet of Guru and Krishna. तो हम सभी कृष्ण और गुरु के चरणों में हमेशा सुरक्षित रहें। I hope you liked the video and the lesson from the video. तो आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से जो शिक्षाएं मिली वो भी अच्छी लगी होंगी। Let us thank the cuckoo and the crow of the Gosala. तो हम जो यहाँ गौशाला के कौवे और कोयल हैं उनको धन्यवाद दें। I have learned so much just by staying in Gosala, little close to nature than all of you. तो मैंने इस गौशाला में क्योंकि मैं प्रकृति के थोड़ा निकट रहता हूँ तो मैंने बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की हैं। Srila Prabhupada ki jai.
श्रीमती कुकू देवी की जय, श्रीमती कौआ प्रभु की देवी की जय, एंड श्री श्री माया देवी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय।